Rise up like a pole star amidst the waves and storms of life. ये एक्सप्रेशन मेरे फादर मेरे लिए यूज करते थे एंड जब मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहा था देन अ जेंटलमैन केम टू माइंड. A calm, a serene, and always smiling entrepreneur. The best smile ever. A person with the best smile I ever met. Tushar Jain. Welcome to the Winspreneur show. Thanks गौरव, ज़्यादा हो गया थोड़ा. Thanks for the generous introduction. नहीं यार, मतलब I've never seen you phased. I've never seen you worried. मतलब कुछ भी चल रहा हो, Tushar and I have worked in the same co-working space and we've shared common areas sometimes. I've never ever seen him phased, fluttered, worried. हमेशा एक स्माइल होती है. देखो क्या ब्यूटीफुल स्माइल है, and he's always carrying that persona of optimism. मुझे ये वर्ड इतना अच्छा लगता है ना, persona of optimism, क्योंकि यही तो सब कुछ है. एंड आज आपके लिए विंस्प्रेनर शो पे we are going to go deep into the story of what makes this wonderful optimistic person. Tushar, what has been the journey like? First of all, thanks Gaurav for inviting for the show. I have seen the previous shows, so really like the initiative that you have taken. We're so glad. Journey, typical middle class, right? From the word go focus on education. So engineer and MBA by education, right? वो हमेशा था कि अच्छी पढ़ाई करो, and which is true, right? वो हमारी generation में उस time था parents का अच्छी पढ़ाई करो, jobs लो. So I have spent 12 years in corporate, working with companies like HCL Technologies, McKinsey and Company. Wonderful. Right, then a couple of startups. So वो सब किया, but with the 12 years of journey, it was always like कि boredom बहुत जल्दी आ जाती थी. And जो mentors थे उन्होंने बोला boredom doesn't mean starting up, boredom means you change the job. इसको boredom पे समझाओ. boredom कैसे मतलब? Yeah, boredom is more like that you feel that I am not being utilized, right? Or is it like feeling stuck? It's feeling stuck. Feeling stuck? Right. What you're calling boredom is like, कि यार मैं इसको और अगर आपने expand करो stimulation, कि stimulation नहीं मिल रहा? Yeah, maybe exactly. So वो कि यार how do I move to the next level, right? आगे और क्या करूँ? And the natural step is you change job or you change roles. वो भी करके देखा, but it's always like कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा. I am capable of doing much more, right? तो वो कैसे? So entrepreneurial bug was right there from the childhood से. में मतलब ऐसा क्या था? ऐसा कैसा exposure था? You don't come from a business family, right? You said middle class growing up. Was it a business family? No, it wasn't a business family. So my mother is a lecturer and my father was a lawyer. So there you go. ठीक है, उनकी एक professional practice है. Normally people would have said कि यार lawyer बना दो, otherwise a teacher's son, right? But उस सारे में there was no. Where was that? वो bug कहाँ से आया? पता नहीं, I don't know कहाँ से आया, but I'll give you some instances. So school में fates होती थी, right? And students had to वो जो एक stall and students had to put their own fate, own stall, right? And you could charge others for that stall. So वो सबसे साल की पूरे स्कूल में सबसे बड़ी excitement यही होती थी कि अब जाके ये आना है, वहाँ पे स्टॉल लगानी है. क्रिसमस फेट होता है, दिवाली फेट होता है. हमारे स्कूल में मई में होती थी. I don't know क्या होता था मई में. गर्मियों की छुट्टियाँ के आसपास. Maybe that's the thing. अब तो याद भी नहीं है. But I was always excited कि अब जाके ये वाली गेम लगाएं तो बच्चे आएंगे. तो और ऐसे करके भी फ्रेंड्स की हेल्प करनी. कॉलेज में भी जो आपके इस टाइप पे थोड़े छोटे एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंसेस है. But once you were independent, right? So I did lot of side gigs. जैसे अपना एक जनपद से जाके मैं वो सोर्स करके लाया आपके इमिटेबल ज्वेलरी जो होती है, सस्ती वाली, जिसको यहाँ पर जाके में फड़ियों वाली ज्वेलरी कहते हैं, राइट? रोड साइड ज्वेलरी. एंड आई स्टार्टेड सेलिंग इट. दैट वाज वे बैक इन 2013 व्हेन द इकोसिस्टम टू सेल वाज नॉट देयर, राइट? ऑब्वियसली आई failed badly there, but still I could gather I won't say a mass, but I could sell more than 100. I could
100 ऑर्डर्स कर पाया मैं, राइट? Yeah, wow. सो ऐसे करके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत लिए एंड दैट केप्ट ऑन बिल्डिंग द बग। मैं हमेशा वो ना हर उसमें ना मैं कहता हूँ ये डॉट्स होती हैं जो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी एक जर्नी बिल्ड हो रही होती है। सो कॉर्पोरेट से एंटरप्रेन्योर कैसे, मतलब वो ना सबसे बड़ी जो सब मेरे मोस्टली व्यूअर्स मेरे को जो आते हैं कमेंट्स या मेरे से पूछता है एंड दे से यार ये टिपिंग पॉइंट क्या है, ये वो कब आप डिसीजन ले पाते हो कि हाउ डू यू लीव 12 years of corporate and you go into this like plunge into the entrepreneurship world? So a very valid question, Gaurav. मैं पहले आपको इस टिपिंग पॉइंट से पहले वाला इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है? सो व्हाट आई वाज डूइंग विद माय Gaurav who is my co-founder, वो भी गौरव, right? वो भी गौरव नाम भाई। तो आई वाज डूइंग पार्ट टाइम एन एडटेक स्टार्टअप विद हिम, ठीक है? एंड वी वर डूइंग वेरी गुड, आरबीआई ग्रेड बी का हम कर रहे थे एंड आई वाज द पार्ट टाइम गाय। आई वाज लाइक कि नहीं, नौकरी थोड़ा नहीं छोड़नी है यार, साथ साथ करेंगे, सब चल तो रहा है, पुटिंग इन एक्स्ट्रा आवर्स, स्लीपलेस नाइट्स, एंड आई डिडंट लीव द जॉब दो द बिजनेस वाज डूइंग वेरी गुड। अच्छा, ठीक है? बट what the tipping point was, I had a daughter in 2018, right? So congratulations. Thank you. So जब वो हुई then I realized कि यार अभी तो ये छोटी है, ये बड़ी होगी, so the salaries that I am getting probably in the next 3-4 years I have to reach to that level, so simple बात ये है कि right now I have the cushion, as she grows probably मेरी responsibilities और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। So that was the tipping point कि this is the best time to start. I had no idea what I'll do, but I realized कि अब मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। I have to move forward. Very intriguing actually, ये इतना point जो है ना, and जो सुन भी रहे हैं उनको भी ये point आया होगा। मेरा next question समझो कि यार entrepreneurship is mostly accepting risk. हमें risk भी लेना पड़ता है, right? हम आप मैं सब लेते हैं, right? And आप basically जब daughter की feeling है, you are actually avoiding, मतलब कि उस risk कैसे, मतलब आप समझ रहे हो कि you're actually jumping into risk but you're safeguarding your daughter's future. ये risk वो jump कैसे बंदा लेता है, क्योंकि एक safety, एक जो safety net है salary आ रही है, ठीक है? यहाँ पर अभी salary नहीं है, right? So I think सबसे पहली proposition जो जैसे मैं सोचता हूँ, I am not doing this for anyone else, I am doing it for myself. मैं अपनी daughter के लिए नहीं कर रहा, that's a byproduct. मैं अपने peace of mind के लिए ही कर रहा हूँ कि यार मुझे entrepreneurship करनी है, 3 साल के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, I feel stuck, so best time is कि मैं अभी कर लूँ। उसका byproduct ये होगा, maybe my अगर मैं जॉब में रहूँगा तो daughter का future secured है, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, बट अगेन 4 years into entrepreneurship, ये मैंने कर लिया, हाँ ये मैंने कर लिया, तो it would be better. Future would be much better than. But in my opinion, as per my thought process, this is a secondary thing. उसका future मैं कर अपने लिए रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा. That's how I think. Right? मेरे को अपना peace of mind के लिए मैं कर रहा हूँ. आपके लिए ठीक है. So इसमें अभी challenges क्या है? मैं इससे पहले आप risk का पूछ रहे थे, मैं risk का बताऊँ. So one thing that I as a human mind, we amplify what we think. अगर आप रिस्क को नेगेटिवली देखोगे, you will just make a blow it out of proportion. अब जब मैंने स्टार्ट किया, रिस्क यही था ना, नहीं चलेगा, that is fine, वापस जॉब में आ जाएंगे। उससे सोचते रहोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो आपने सोच भी लिया, नहीं चलेगा, उसका वर्स्ट केस क्या होगा? I have to get back into job, वो तो मैं अभी भी वहीं पे हूँ, वही कर रहा हूँ, right? So what after, अगर मैं 2-3 साल बाद जा रहा हूँ, so I thought it like that rather than कि अगर फेल हो गया 2 साल का, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। Time तो obviously it's your opportunity cost, right? You have to put in some time. But if you start thinking the risk in a way कि यार worst case क्या होगा? I'm not going to die. I am capable enough कि यार कुछ तो कर ही लूँगा. Startup में नहीं हुआ, वापस job में आ जाएंगे. We'll do something. I was running blogs at that time. I had a residual income from those blogs. I scaled up those blogs. So जो skill set आता है उसमें कुछ ना कुछ तो बन जाएगा. So again the perspective here is how you perceive risk. So risk is perception. Risk is never real. Perception, but इसमें आपने कहीं notice किया? वो ऑप्टिमिस्टिक तुषार जैन वापस बाहर निकल आया, उसने कभी रिस्क को एम्पलीफाई नहीं होने दिया, द परसेप्शन ऑफ रिस्क उसको एम्पलीफाई नहीं होने दिया आपने, है ना? एंड यू लुक्ड एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड लुक एट हाउ यू कैन ओवरकम दैट. वंडरफुल. और चैलेंजेस क्या है लाइक स्टार्टअप में या आपकी जर्नी में चैलेंजेस क्या है? स्टार्टअप में तो ऑफ कोर्स आते ही हैं. इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक वो भी आई थिंक आई विल बी स्पेसिफिक टू स्टार्टअप. सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टार्ट करना ही होता है. एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, एग्जीक्यूशन बिकम्स
a big challenge. How do you get the right team, right? How do you define your ICPs? वो customer iterate करके you are never clear, especially in products. Probably you start with one product or you start with a hypothesis, and then those hypotheses are not true then, right? So how do you? What's the time to move to the next hypothesis? How do you एक hypothesis छोड़ के अगले hypothesis पे जाना? सारे I think every day is a challenge. अब वो challenges की definition change हो रही है. So किसी को अगर ICP पूछा था, that is the ideal customer profile, and hypothesis जब ये बात कर रहे हैं, you have a certain set of what you say, a statement you make कि ये ऐसे होगा, then you have to go to the market and test it for deductions, कि उससे क्या निकला, right? There are two methods normally followed in entrepreneurship. One is called the scientific method, जिसकी तुषार बात कर रहे हैं, and the second is called the effectuation model. वो सरस्वती का एक पेपर है, वो कभी बातें करेंगे, but मैं थोड़ा सा technical हो गया, sorry, but वो करते हुए अभी ये आपने सबसे वर्ड जो मेरे को पकड़ा मैंने, वो था execution. सबको ना ये सब लोग जंप तो कर लेते हैं, बम तो है सब कुछ, बट एक्सिक्यूशन में नॉर्मली लोग स्ट्रगल करते हैं, राइट? सो हाउ डिड यू गो अबाउट बिल्डिंग दैट टीम? एंड आपके साथ गौरव तब भी था? सो गौरव वाज अगेन, यहाँ पे गौरव स्टार्टिंग में पार्ट टाइम था. अच्छा, गौरव वाज इनटू जॉब. अब वो ना पलट गया. तो जब ये आइडिएशन वगैरह चल रही थी, गौरव वाज इनटू जॉब एंड आई वाज नाउ फुल टाइम. अच्छा. सो वो आइडिएशंस वगैरह चल रही थी, एंड गौरव इवेंचुअली, आई मीन वी वर वेरी क्लियर. सो आई नो गौरव फॉर पास्ट 22 years. वी डिड आवर जो कोचिंग होती है इंजीनियरिंग की, वी डिड इट टुगेदर, सो दैट्स द एसोसिएशन दैट वी हैव. तो वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर था कि यार उसका और मेरा माइंडसेट काफी सिमिलर है, दैट ओके वी विल स्टार्ट ऑन आवर ओन. Obviously एक रीजन जो लोग कहते हैं, मतलब again I don't know whether it's a right or wrong, but apart from all the things, entrepreneurship is definitely a wealth building opportunity, right? So वो by product है, but it's a by product which you can't ignore. So वो एक हमारा बहुत clear था कि यार the problems that we are solving, obviously it's a wealth building opportunity as well, right? तो वो we were clear, and eventually Gaurav jumped on board, and now we are 2 full-time founders. Wonderful. And what are you guys doing currently? Yeah. So I run a software enterprise SaaS product by the name of Enthu.ai. Enthu.ai. So if anybody has to search for you, it's Enthu.ai. Enthu.ai. So Enthu for enthusiasm, it's an acronym, and so वहाँ से आया था. So Enthu.ai, and what it does is it's a customer inciting tool. So let's say you have sales teams who talk to customers day in and day out. We drive customer insights from the conversations that your agents are making, your people are making, right? And then funnel that intelligence back to your agent coaching and training. अच्छा. So आप उनको better बनाते हैं. You use a lot of data, and analyzing that data, you make them better at what they are doing, and those insights would be absolutely valuable, right? So when we started, those insights were valuable for the sales team. वो तो बहुत intuitive है, right? Sales के लिए ही है. But eventually, right now in our journey, the marketing teams are asking for those insights कि मेरी call में customer product के बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है, कस्टमर कौन से फीचर्स डिमांड कर रहा है, कस्टमर कहाँ पे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे which I could have put on my marketing messages or language, and I mean वो कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कस्टमर को, right? Similarly product teams की what should I build next, what is the customer demanding, how am I faring against competition, right? So all those insights, so customers have started demanding this. So again we started with customer insights for sales, but now the vision is कि इसको और बड़ा कैसे करें. Wonderful. Sounds very good. If anybody wants to check them out, Enthu.ai, must check them out. They do brilliant work. और क्या चल रहा है तुषार लाइफ में? तुषार को ये ऐसे स्माइल कैसे मेंटेन करते हो, और क्या है आपकी फैमिली में कौन है, क्या चल रहा है जिंदगी में, लाइक खुश कैसे रहते हो? नहीं, आई थिंक दुख तो बहुत है. ऐसी बात नहीं है. नहीं, बीवी की बात नहीं कर रहा. इनफैक्ट वही कह रहा. I know her personally. I mean, इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता था, मेरी बीवी से पूछना तो वो कहीं कहाँ स्माइल करते हैं, हमेशा तो मुंह सूजा होता है. तो वो पर्सपेक्टिव है देखने का, राइट? बट आई मीन जोक्स अपार्ट, पता नहीं नेचुरली आता है, मतलब आई एम नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. अब स्माइल है तो है,
But हाँ, moments of ups and downs, they are lot of moments. I think I'm a lot into spirituality. So what I realized कि जो ups and downs है वो भी आपका ही creation है. You can always stay in a position of sine wave होती है. तो आप हमेशा crest में हो सकते हो, हमेशा trough में हो सकते हो. That's your choice. So what I am doing, trying to be as a person, is that I have to always remain in the forward. You've talked about this twice, about it being a mindset, it being a perception. So that means you are talking about कि यार ये सब कुछ जो है ना, ये हमारा thought process है. ये तो जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम किसी situation पे react करते हैं, वो सब हमारी choice है. Are you actually saying कि हमारी choice है? Right? Absolutely. So point is, the thing that you focus on, it expands. ठीक है. Like you said, amplify हो जाता है. आप जिस चीज पे focus करोगे वो बड़ी होगी. अब वो आपकी choice है कि यार मेरे को मैं फेल हो रहा हूँ बार-बार, मुझे उसी पे फोकस रखना है कि जो मेरे सक्सेसेस हैं मैं उसको देख के मुझे उस पे सोचना है और उसको करना है. It's difficult to do. Actually ये Winspreneur जो नाम है, वो भी wins जो word है ना, वो उसी पे positives पे फोकस करता है, उसी डायरेक्शन में जाता है. अरे वाह. And it's not कि पॉजिटिव पे फोकस करके सब कुछ लाइफ में ठीक चलेगा. But point is कि जो नेगेटिव्स आएंगे, you can quickly leave them behind. ऐसा है, फेलियर तो रोज आता है, राइट? अब रोज ही ऊपर नीचे चलता रहता है. बट जब फेलियर्स आते हैं, you just take it as a situation. You don't take it as a destiny कि यार अब ऐसा क्यों हुआ. वो थोड़ा माइंडसेट बन गया है, पहले नहीं था. मजा नहीं आता ऐसे के इंसान से मिलने का जिसके ये 5 वर्ड्स पे जिंदगी बैठी है, और यही तो 5 वर्ड्स हम हमेशा बोलते रहते हैं. तुषार की जिंदगी बैठी है ऑप्टिमिज्म पे, डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी पे और showing up. He's working, he's out there, he's trying, he's making an effort. But इस सबको तुषार ने बांधा हुआ है अपनी भूख से. You're out for a purpose. You are there day in, day out. You're working for something, and purpose पकड़ लिया आपने अपना. Exactly. Very nice. Yeah. So Tushar, ये show ही, it's all about your success story. It's about learning from you. It's about knowing you better. So if you can please look into the camera and tell our viewers a few words of inspiration, a few words of guidance, a few words that you feel will benefit them. Tough question है. पहला तो ये कि success is very subjective, right? My success might not be a success for you, right? And अगेन वही थॉट प्रोसेस है कि क्या आप सक्सेसफुल हो. अगर मैं देखूं तो आई एम इन अ जर्नी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, और वो जर्नी हमेशा जर्नी ही रहेगी. इफ आई टॉक अबाउट सम वर्ड्स ऑफ पर्ल्स ऑफ विजडम, या सो this is my story. So I started my entrepreneurship journey very late. So probably I was 30 plus when I started. Right? So my suggestion would be if you are thinking of starting up, these are the best times to start up, right? You mean at a younger age? At a younger age, right? So जो गलतियाँ मतलब मैंने, and I assume Gaurav you as well, you started late, right? गलतियाँ की. So जो गलतियाँ हमने 30s में की हैं, you have an option to make those mistakes and amend them in your 20s. Yes. तो और आज की डेट में in our time entrepreneurship was looked down, right? कि अच्छा ये तो इनका टाइम थोड़ा सा मेरे से वो है, मेरे टाइम पे तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड ही नहीं होता था. ये स्टार्टअप वर्ड ही नहीं होता था. अब ऐसा है कि even let's say even if you are not successful in your startup, and success is not the right word, let's say you are not able to make it up, right? So you will be better accepted in the industry, क्योंकि it's all about the learnings that you gather. So it's not again perception. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मैं 2 साल की जॉब छोड़ रहा हूँ, तो यार वो 2 साल की जॉब तो शायद वापस आ जाए और उससे बेटर आए जो आपके पास अभी है. But if you are starting up and if you can afford, right? So affordability is there, right? Again I say that was a क्या कहते हैं उसको जेनेटिक नहीं क्या कहते हैं उसको लकी, उसको कुछ कहते हैं एक टर्म में कि that was our luck that our parents were there to support us. फैमिली थी, कोई ऐसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे अगर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट देयर, राइट? देयर वर सेविंग्स. सो इफ यू आर इन दैट सिचुएशन प्रोबेबली यू शुड ट्राई इट आउट अगर दिमाग में है तो, राइट? अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिपेंट. सैलरी का तो शायद एक बार अगर चस्का लग गया तो वो छोड़ना इट्स लाइक कोकीन. हमें ना एक्चुअली कंडीशनिंग ही जो की जाती है ना तुषार, वो है सारे हमें कहते हैं सेटल डाउन है, एंड वो सेटल डाउन वो हमें एक कंफर्ट जोन में डाल देता है. वो कंफर्ट जोन इज ये कि हमें एक रेगुलर सैलरी आ जाए. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समबडी, मैं उसके ड्रीम्स पूछे, वो कहते हैं मेरे को ना 10-12 हज़ार की नौकरी लग जाए. दैट वाज द गोल. एंड मैंने कहा नहीं यार,
I have to help this kid out, like, because he has to start thinking slightly more than expand his, horizon of the thought process itself, कि नहीं, there is more to life. जैसे आपने कहा ना, मैं wealth building is a byproduct. Again, a byproduct of what you do it, but it can be a goal also, it can be very nice. So this was wonderful. It has been such a pleasure to have you on the Winspreneur show, Tushar. If you like the content that we bring to you, we bring you content every week regularly, and if you're liking the content, please do subscribe. I'm new to the YouTube world, and I really need your support, and with one smile to another smile, we ask you to subscribe. That being said, have good luck for life, best karma for you, and do well in all your entrepreneurship endeavors. You take care. From the Winspreneur Show, Professor G signing off.